Hi viewers, I'm JK Gupta. Today I'm going to record the first video of motion in one dimension. What is motion in one dimension? When a body is moving in a straight line or having a free fall, the motion is called motion in one dimension. This total chapter is under kinematics. Kinematics is a branch of physics where we'll learn only the parameters of motion. What is parameters of motions? What are the parameters of motions? Acceleration, velocity, average velocity, instantaneous velocity are the parameters of motion. There is a question, why a body have motion? To answer this question, we have to think another branch of physics that is called the dynamics section. In dynamics, we'll learn the reason behind motion and the outcome of the motions. So let us start with the dynamics section to understand kinematics. So if a body have motion in any dimension, there should be force. The expression of force equal to mass into acceleration. This acceleration is the part of kinematics. If we elaborate acceleration, we'll have rate of change of velocity. To understand the rate of change of velocity, we have to know what is rate of change of position. To understand the rate of change of position, we have number one, distance, and second, displacement. So when we analyze acceleration, we get these things. We have left mass of the body. That means the mass of the body will also determines what will be the motion. To understand this, let us consider an example. I am taking a force 10 Newton as a fixed force. Considering a ball of 50 gram, what will be the acceleration? 10 equal to 50 by 1000 into a 20, acceleration equal to 200 meter per second square. If I change the ball and I consider a 5 kg ball, I am throwing it with 10 Newton. 10 equal to 5 into a. Here the acceleration is 2 meter per second square. What we have understood is as I change the mass of the body, the acceleration of the body changes, actually decreases. तो इससे क्या समझ में आया? अगर कोई चीज भारी है, अगर उसमें सेम टाइप ऑफ फोर्स दिया जाए, वो स्लोली मूव करेगा बिकॉज इट हैव लेस एक्सिलरेशन. अगर वो हल्का है, उसमें ज्यादा एक्सिलरेशन आएगा. दैट्स वाई व्हेन अ मैन शूट अ बुलेट का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है और रिकॉइल का वेलोसिटी कम होता है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द काइनेमेटिक सेक्शन एंड वी आर गोइंग टू लेफ्ट दिस साइड ऑफ द मोशन. लेकिन हम लोग को दिमाग में आना चाहिए, हम लोग एक ना एक दिन इसको कवर करेंगे और ये हम लोग का बेस फेंकेगा चैप्टर 5 दैट इज द लॉज ऑफ मोशन अंडरस्टैंड करने के लिए. Let us start with distance and displacement. It is very easy. The definition we have learned in class 9. But I will try to explain distance and displacement with the help of projection. What is projection? Let us consider a curved path. This is a path. The initial point and the final point is this. मेरा क्वेश्चन ये है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक पाथ में एक साथ जनरेट हो सकता है. If I able to show that distance and displacement occurs at a same time, तो ये हम लोग को वेक्टर एनालिसिस में बहुत हेल्प करेगा. चलो ये समझते हैं. If a body is moving on the curve path and I project a torch on it और नीचे में एक कॉपी रख दे, तो क्या होगा? इसका शैडो आएगा. The curved path is called the distance and the shadow is called the shortest distance of the initial and final point, that is displacement.
इसको और डिटेल में समझने के लिए बॉडी को मूव करवाता है। सोचो ये बॉडी जब इधर आएगा, इसका शैडो इतना दूर, ये बॉडी इतना आएगा तो शैडो इतना दूर, ये बॉडी जब फाइनल पॉइंट में आएगा शैडो भी फाइनल पॉइंट में आएगा। दैट मीन्स द बॉडी इज मूविंग विथ अ हायर पेस in this path because the path is longer than the shortest distance and the shadow is moving with a slow pace because it have less distance to cover. So we understand that distance is larger in magnitude and we need less space. The pace is called as speed. In displacement, the path is smaller, we need less space, it is called velocity. So the curved path A and B, concept of projection state that the body start moving and the shadow is also moving. The time is fixed. Let us consider 15 minutes is the time. So a body takes 15 minutes to come over here. It is very much clear that the path is longer with respect to this, so shadow will have to move slowly. This path have speed, this path have velocity. So we can analyze distance and displacement with respect to magnitude. So distance is greater than displacement. If we change the path and consider a straight line, what will happen? If we consider only a straight line A to B, here the distance and displacement will be same. As a result, we have equal magnitude of speed and velocity. So when we consider this path, distance is greater than displacement. When we consider this path, distance is equal to displacement. If we combine these two situations, what will we get? Distance is greater than and equal to displacement. क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, शो दैट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप बताना, ये पाथ में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और ये स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन के पीछे में इतना कुछ है, अब इसका वैल्यू कैसा होना चाहिए? विल take acceleration as constant acceleration means the magnitude will be 2 meter per second square, 3 meter per second square, etc. अब देखो ये हाइपोथेटिकल है, आप घर से स्कूटी लेके चले हो, अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सीलरेट कर रहे हो बाइक को, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले 1 मीटर पर सेकेंड था, आफ्टर दैट 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर दैट 5 मीटर पर सेकेंड। अब बीच में कोई आदमी आ गया तो आप उसको ठोकते हुए जाओगे। इट इज नॉट इन रियलिटी। रियलिटी में क्या होता है, आप एक्सीलरेट कर रहे हो, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, ऐसे करके चलता है। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म केस। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द यूनिफॉर्म केस, दैट मीन्स द एक्सीलरेशन इज फिक्स्ड, आफ्टर दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में एक्सीलरेशन को समझाने के लिए इसको चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन इज डी वी बाई डी टी और वी डी वी बाई डी एक्स। तो ये कैलकुलस एक्सप्रेशन है, आज हम लोग ये कैलकुलस एक्सप्रेशन भी सीखेंगे। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन समझाने के लिए हम लोग के पास 3 इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नंबर 2 वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, another is
v is equal to u plus at. That means कांस्टेंट मोशन को समझाने के लिए 3 और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को समझाने के लिए 2 डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है. नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द डायमेंशन ऑफ अ डिफरेंशियल एक्सप्रेशन. द जनरल एक्सप्रेशन फॉर differentiation is dy by dx. If I consider y as a length and x as a length, तो dy means change in length. Change means subtraction of two lengths. उसका भी यूनिट मेरा मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा. तो मीटर मीटर कट जाएगा, इट इज डायमेंशनलेस. So if I change y or replace y by velocity and x by time, what will be the effect? Change in velocity means velocity meter per second by second, because time represent by second. It will meter per second square. It represent acceleration. Now it is not a dimensionless quantity. तो डिफरेंशिएशन का जो डायमेंशन है ये समझ में आना चाहिए. अगर आप dy बाई डी टी लिख रहे हो तो वो क्या होगा, dv बाई डी टी लिख रहे हो, उसका एक डायमेंशन एनालिसिस क्या होगा. इफ आई रिप्लेस v बाई x इज डिस्टेंस, दैट मीन्स मीटर, एंड टाइम इज सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड represent the velocity. That means the differential expression is very handy if we understand the dimension analysis of that expression. We'll get different quantities by changing the variable in the numerator section. Another expression of dimensions, another expression of velocity we have considered v dv by dx. So the dimension of this is the expression for acceleration. Velocity is meter per second into meter per second divided by distance is meter. If I cancel 1 meter, what I get, meter by second into second, second square. V dv by dx is also acceleration. So we need to know the different expression of acceleration. What is the change in the expression? Here we have x, the another expression we recently discussed, that is dv by dt. dv by dt. That means we are differentiating with respect to s. Here we differentiating with respect to time. Both of the cases we can get the acceleration of the body, and that acceleration is non-uniform. There is a traditional method of differentiation. Differentiation means reducing the power by 1. If I differentiate 4t square, that means I am interested in differentiating this expression, I have to take dt. If I change it by x square, I have to change time by x. So in this situation, the constant will came out dx square by dx. Here we have to reduce the power, differentiating x square with respect to x. 4, the power will come in front, and x2 minus 1, that is 8 x to the power 1. This is the mechanism of differentiation for an algebraic expression. If I take an expression of position, x equal to at square plus b, I have to find acceleration. First I have to differentiate it dx by dt, because this x is depending on time. So a d dt
of t square plus d dt of b. dx by dt, distance by time. So distance means meter, time means second, that is velocity. Meter per second is velocity. Velocity is a, पावर सामने और पावर एक घटेगा, 2 minus 1 1. Now if we differentiate a constant, here the main variable is t is not present over here, so the value will be 0. So the expression of velocity is this. So I differentiate 1 times to get velocity. Now I have to differentiate again to get acceleration. So dv by dt is acceleration and the value of acceleration is dt by dt. देखो dt dt कट जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना dt dt कट जाएगा, तो 2a into 1. Differentiation of t with respect to t is 1, that is the acceleration is 2a for the body. तो देखो x is the position of the body in terms of t. If I want to find the acceleration, I have to differentiate 2 times to get acceleration. Now, if I get the expression of velocity and I have to find the expression of position, then I have to integrate. Integrate means integration. Integration का अपना कुछ रूल है, उसके पहले differentiation को अच्छा से grip कर लेते हैं. Let us consider another example. A body having velocity v equal to 2x square plus x plus 5 under root. Find the acceleration of the body at t equal to 2 seconds. This kind of acceleration, when I specify the time, that acceleration is called instantaneous acceleration. Okay, so we have problem with the root. We'll square both sides. So v square equal to 2x square plus x plus 5. In the earlier expression or example, we have considered x is equal to at square plus b. That means we differentiate x one time, we get velocity, again we differentiate velocity, we get acceleration. But the main thing we have to observe, the expression was in terms of time. Here the expression is in terms of x. So what we have to do, we have to differentiate the expression with respect to x. Here the expression depends on t, so we use dx by dt. Here we have to deal with ddx of v square to ddx of x square plus d dx of x, and we know differentiation of 5 is 0. v square का differentiation 2v dt, पावर सामने 2v dv dx, 2v dv dx. पहले पावर का सामने होगा, ये चेन रूल कहा जाता है. जैसे v का डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो dv by dx, अगर v स्क्वायर का होगा तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन फिर v का डिफरेंशिएशन. पावर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2v, पावर सामने और 2 minus 1, एंड v का डिफरेंशिएशन क्या है हम लोग को मालूम नहीं है, v इज अ वेरिएबल, dv by dx करके छोड़ देंगे. ये डिफरेंशिएशन का आंसर तभी आएगा जब वेरिएबल और x सेम हो जाता है. अगर वेरिएबल को हम लोग नहीं ओमिट कर सकते हैं तो v dv by dx फॉर्मेट में रखना है. 2 पावर सामने आएगा, 2 2 4 x and dx dx that is 1. पावर 2 minus 1 is equal to 1. ये 2 को इधर में शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v dv by dx इक्वल टू हाफ इंटू 4x प्लस 1. v dv by dx हम लोग को मालूम है, इसका डायमेंशन एक्सीलरेशन के डायमेंशन से इक्वल होता है. नाउ द क्वेश्चन इज, यहां पर चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहां पर टाइम डिपेंडेंट कुछ नहीं है, यहां पर x पकड़ लेते हैं. इफ x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर,
then what will be the acceleration? Because I have considered the expression in terms of x, so the value of x should be given. So acceleration at x equal to 2, simply we have to put the value of x in here. So 4 2 ja 8 plus 1 9, 9 by 2, that is 4.5 meter per second square. If I change the value of x, the value of acceleration will also change. So it is a clear indication of non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration means the acceleration is changing with respect to time also. But in the 3 equations of motion में हम लोग का जो acceleration होता है वो fixed होना चाहिए. तो समझ में आया ना डिफरेंशिएशन? एक dv by dt करके हम लोग एक्सप्रेशन लाए और एक भी dv by dx करके भी एक एक्सप्रेशन लाए. These are the most important expression for finding acceleration. Now we are going to understand the concept of integration. Integration means to add something or to add the power of variable. In differentiation, we decrease the power by 1. In integration, we have to increase the power by 1. If I integrate x, the variable is x, I have to put it here dx. These are the representation. This dx and this curl sign is for integration. Here, the power is 1. Power will be 1 plus 1, 2 divided by 2. Simply, if we differentiate x square, what will be the outcome? The power will come in front and power will get decreased 2 minus 1. यहाँ पर देखो पावर सामने आएगा, जो पावर था वो इनिशियल पावर था और यहाँ पर क्या है, फाइनल पावर को नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है प्लस c. सिमिलरली इफ आई इंटीग्रेट x टू द पावर 3 dx, चलो इसको चेंज कर लेते हैं, t क्यूब dt, तो t to the power 4 and the final power will be in the denominator. Done. So this is the integration. How it will help us to find the different parameters of motion? Let us see. Let us consider the expression of acceleration. A equal to 2t square plus 5. We know that acceleration is dv by dt. Behind the mind, we have to think that in case of integration, the dt, if I try to integrate time, dt should be there in multiplication form and dt should be there in division form for differentiation. 2t square plus 5. If I multiply dt, what will happen? dv equal to 2t square dt plus 5 dt. Now I am going to integrate both sides. I get the expression t square dt. What I need? The integration sign. Write down integrating both sides. Integration dv. Integration dv means v should be there with power 0 dv. In integration, we have to add power 1. 0 plus 1, that is 1. Divided by 1, that is equal to v. Integration dv is equal to v. Similarly, integration dt, integration t to the power, t is not there, t to the power 0 means 1. 1 को हम लोग t to the power 0 से लिखे dt. तो we have to add power 0 plus 1 by 1, that is t. Integration dv is v. Integration to t to the power 3 by 3 plus 5 into t plus c. So देखो एक्सीलरेशन से वेलोसिटी हम लोग को मिल गया. इफ आई फर्दर चेंज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, आई विल डू dx by dt. अगेन यहां पर dv by dt था, dx by dt इक्वल टू 2 by 3 t क्यूब प्लस 5t प्लस c. Again I can multiply dt with each and every terms in the right hand side. dt, dt, dt. Again integrating both sides, we can find integration dx is equal to x. 2 by 3
power 3 is over there, तो t to the power 4 by 4 plus 5, t is over here, t to the power 1, that means t squared by 2, power will increase by 1, and integration dt is t, ct plus c dash. There will be a constant after integration. Okay, x equal to 1 by 6 t to the power 4 plus 5 by 2 t square plus ct plus c dash. This is the expression of position. तो एक चीज समझ में आया, जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तो पोजीशन से, पोजीशन मींस x, पोजीशन से हम लोग को वेलोसिटी मिला, फिर इंटीग्रेट किए, डिफरेंशिएट किए तो हम लोग को एक्सीलरेशन मिला. तो अगर हम लोग को बैक प्रोसेस में आना है तो एक्सीलरेशन से वेलोसिटी आएगा तो इंटीग्रेशन से, फिर वेलोसिटी से पोजीशन आएगा तो इंटीग्रेशन से. समझ में आया ना? तो डिफरेंशिएशन में पोजीशन टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू एक्सीलरेशन. इन जनरल अगर आप इसको सोचोगे, डिफरेंशिएशन में पावर घट रहा है तो डायमेंशनली वो डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन हो ऑपोजिट रहा है. पोजीशन का डायमेंशन मीटर है, इसका मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो डायमेंशनली देखो, ये मीटर है, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो डायमेंशनली इसको देखोगे तो डायमेंशन इंक्रीज होते जा रहा है और इंटीग्रेशन में डायमेंशन आपका डिक्रीज होते जा रहा है. याद रखना. तो छोटा से अगर बड़ा जाना है तो डिफरेंशिएशन करना है, और बड़ा से अगर छोटा आना है वी हैव टू इंटीग्रेट से. तो ये कुछ एग्जांपल्स था जहां से हम लोग जो मोशन इन वन डायमेंशन का बेस क्रिएट किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और एनालिसिस करेंगे. थैंक यू.